So today we have to discuss a important topic of civil engineering. The topic name is water supply and wastewater engineering. So water supply and wastewater engineering is coming under the environmental engineering. Actually, the environmental engineering is three types. One is your water supply engineering. Second one is your waste water engineering, and third one is your environment engineering. Okay, so these two chapter is your one subject, that is WS and WWE, water supply and wastewater engineering. And this chapter, this chapter environmental engineering is already you have studied in third semester. So today we have to discuss the water supply engineering and wastewater engineering. Okay? So at first we have to discuss the water supply system. Okay, water supply system. So what is the necessity of water supply system? What is the necessity? So nowadays there is some polluted of the because of the pollution of environment, there the groundwater is also polluted, and due to the global warming there is the lack of rain nowadays. So the groundwater table are also decreasing day by day. So that's why we have to supply the water to our houses by the government scheme. So by the water supply government scheme, we have to supply the water, we have to supply the pure water. We have to supply the pure water to our houses, is known as your water supply system. Before we go to the water supply system, we have to know the area of the population, by which area of that population in which we have to supply the water. So water supply system केतला में डिजाइन करबा, तो डिजाइन करबा पूर्व हमको जानबार अछि जे सेही एरिया रो पॉपुलेशन केते एवं सेही एरिया रो लोक माने केते वाटर डिमांड करंती, माने केते वाटर यूज करंती एज पर कैपिटा, मींस एज पर द पॉपुलेशन वन पीपल. तो प्रत्येक पीपल बा पर कैपिटा बा पर हेड केते वाटर लोक माने यूज करंती बा डिमांड करंती ताकू हमको जानिबार अछि. तो water demand पूर्वरु we have to calculate the particular area, the population of that particular area. एवं से population जो calculation हमें करिबो, तो जेहेतु गोटे पॉइंट अछि, जेहेतु तोमरो water supply system is a very costly system. कोन पई? At first we intake the water nearest resources. First point, we intake the water nearest sources. Then we check the quality. We check the quality of that water by different methods. After that, we go for the treatment. We go for the treatment of water. Then we go for store the water. Then we have to supply or we have to distribute that water to our houses. This is your distribute the water to our houses.
ओके तो जेहेतु इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस सो लॉन्ग प्रोसेस जेहेतु इट इज आल्सो अ वेरी कॉस्टली मेथड तो कॉस्टली मेथड जो आम ये कौन कर ना वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करबार पूर्वरु सेही एरिया रो जो पर्टिकुलर एरिया पई ताको हमें डिजाइन करबू से एरिया रो केते लोक संख्या अछंती एवं फर्दर पॉपुलेशन केते इंक्रीज हेई पारंती ताकू हमको कैलकुलेशन लेबा को पड़िबो काहे कि जेहेतु वाटर सप्लाई सिस्टम इज ए वेरी कॉस्टली सिस्टम तेनु ताकू हमें ईयर टू ईयर आउ थरे रिन्यू बा से प्रोसेस को आउ थरे रीडिजाइन करि परिबो नाही तेणु रीडिजाइन करि जेहेतु हम रीडिजाइन करि परिबो नाही ताकू हमें कोन करबा वी हैव टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन अप टू 2 to 3 decade point that is the point we have to calculate the population forecasting up to 2 to 3 decade. One decade is equal to 10 years. So we have to calculate the population of that particular area up to 20 to 30 years. 20 to 30 years. So there are some formulas of population forecasting methods. So we have to calculate the future population or population forecasting by some method. So first method what is the first method? The first method is arithmetic increase method. Before we go to the formula, we want to know some points. There is some points. What the point? In arithmetic increase method, it gives the lowest value. And here the growth of increase in population decade to decade is constant. Okay, write down this point. The result of population forecasting in this method is very small comparable to other methods. And in this method the growth of increase in population decade to decade is constant. तो जेहेतु लो वैल्यू दोची वेरी स्मॉल वैल्यू दोची कंपेरेबल टू अदर मेथड एवं ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन आल्सो कांस्टेंट सेही पाई arithmetic increase method को we have to use that method in our old city or developed city. कौन पाई ता developed city वालों करे और mass of people actually mass of people कोंटी जो city को समाने एज ए जॉब रिलेटेड किंबा इकोनॉमिक निजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई जाई था तो जेहेतु ओल्ड सिटी बा डेवलपमेंट सिटी मान करे ऑलरेडी लोक माने जाई सिटी रही जाई थांती काम पाई बा जॉब पाई तो मास ऑफ हेवी मास ऑफ पीपल मे बी जाई पारी थांती बा नो थांती ठीक अछि तो सेही जिंस पाई मास ऑफ पीपल मे बी जाई न पारंती सेही पाई आमे कोन एठी कोन एज्यूम करबा the growth of increase in population decade to decade is constant but जो developing city जो developing new developing city young city रहउची तो सेठी इकोनॉमिक डेवलपमेंट निजरो इकोनॉमिक
डेवलपमेंट बा जॉब पाई लोक माने मास ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल आर कमिंग टू द डेवलपिंग सिटी ओके तेणु एरिथमेटिक इंक्रीज जेहेतु हमको सबुटो लोएस्ट वैल्यू दउची एवं तार ग्रोथ आल्सो कांस्टेंट डिकेड टू डिकेड तेणु this method is adopted in old cities or developed cities okay developed cities तो एबे हम आसीबा फार्मूला एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड रो कोन सब फार्मूला हो सब किसी जानि सरला हम कोन यूज करबा मेथड को तार ग्रोथ रेट कांस्टेंट ए सब जानि सरला परे नेक्स्ट हम आसीबा तार फार्मूला ऊपर ओके सो द फार्मूला ऑफ arithmetic increase method is Pn equal to P0 plus n x bar. What is the Pn? Pn quantity. Now Pn is your population after n decade. Means जो एरिया रो पॉपुलेशन हमको बाहर करबार अछि तो से एरिया रो पॉपुलेशन अप टू क्वेश्चन ले जते डिकेड रो देइतियो मींस 2 डिकेड पर्यंत हमको पॉपुलेशन बाहर करबार अछि तो दैट इज द Pn मींस पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड रे केते पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करबू दैट इज योर Pn दैट इज व्हाट द पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड देन P नॉट या P0 व्हाटएवर यू कैन से इट ओके तो P नॉट बा P0 is your last known population. What? Last known population means क्वेश्चन ले जते बडे दिया जाइतिबो ईयर एंड पॉपुलेशन तो जतेटा ईयर देइतिबो लास्ट रे जो ईयर रहिबो दैट इज द लास्ट नॉन पॉपुलेशन माने से ईयर रे लास्ट रे जो ईयर रा पॉपुलेशन दिया जाइतिबो दैट इज द P0 and it is called as last known population. Then what is n? That is number of decade. Number of decade. तो कितने decade रो फ्यूचर रे कितने decade रो हमें population forecasting बाहर करबा को पड़िबो बा approximately future population बाहर करबा को पड़िबो. That is the number of decade n. Then what is x? Here is x is average growth of increase in population. तो average growth of increase in population कौन ना decade to decade जत्ता बड़ा हमारा population देइथिबो example 1930 रे 25,000 देछि 1940 रे 30,000 देछि तो 30 to 40 means one decade तो from one decade from 1930 to 1940 तक केते ग्रोथ होछि तार पॉपुलेशन केते ग्रोथ होछि तो दैट इज 30,000 minus 25,000 means 1930 रु 1930 to 1940 पर्यंत केते तुमरो पॉपुलेशन ग्रोथ होची दैट इज व्हाट 5,000 सो दैट 5,000 इज योर x माने गोटे डिकेड वन डिकेड बाय डिकेड टू डिकेड केते तुमरो पॉपुलेशन ग्रोथ होची ओके केते पॉपुलेशन ग्रोथ होची दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिकेड टू डिकेड ओके डिकेड टू decade that is your x bar means it is your average okay it is your average तो मु आज फार्मूला कहि सारली नेक्स्ट क्लास we will do the problem according to this formula okay thank you